मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। ब्रोकर ने फ़ोन करके बताया सर ये स्टॉक अच्छा है आप ले लीजिए तो ले लेते। अच्छा, बट क्यों अच्छा है वो कोई रीज़न पूछता नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये इंटेंशन होता है कि मुझे मल्टी बैगर्स ढूंढना है, छोटे कंपनी में पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, और उस प्रोसेस में ओनली फॉलो द स्टॉक प्राइस। वो गोल्ड ऊपर जा रहा है। The yellow metal has been on a stunning rally. गोल्ड में भी लगातार अब रैली बनी फिर से शुरू हो गई। Gold has hit a fresh record today. सिल्वर ऊपर जा रहा है, चलो लेते। कॉमन मिस्टेक, देयर इज अ फोमो। भावेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अभी अगर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें हमारे आज के गेस्ट का, तो वी हैव भावेश संघवी जो ग्रोथ अफिनिटी वेल्थ के सीईओ है। एंड आप कंपनी में यूजुअली आप क्या करते हो, मतलब आप HNIs, UHNIs और जो एफ्लुएंट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, राइट? करेक्ट। ओके, एंड अभी आपका जो एसेट अंडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अबाउट 500 करोड़ के आसपास है। करेक्ट। ओके। तो आज का जो डिस्कशन होगा, आई थिंक वी कैन डू इट अराउंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड स्पेशली जो भी मैंने आपसे बैक स्टेज डिस्कशन किया है, तो आई गॉट टू नो दैट यू आर वेरी गुड एट फाइंडिंग रेड फ्लैग्स इन अ कंपनी। मतलब अगर कोई, मतलब लोग पता है कि अभी आज के मार्केट में ना स्टॉक भागता है तो लोग स्टॉक के पीछे भागते हैं, बट दे फॉरगेट टू चेक कि रेड फ्लैग्स क्या है। इसीलिए most of the retail investors they get trapped in a particular stock or in a particular asset. So Bhavesh ji, first what we'll do is that we'll start with कि अगर आज के टाइम में अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म रियलिस्टिकली अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना है तो वो किस तरीके से पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं या बना सकते हैं, और उसमें वो कौन से एसेट्स इंक्लूड कर सकते हैं आज के टाइम में कंपेयर टू दिस? Okay. So, Bharat, first of all, thank you for having me on your podcast. I don't know how you reached out to me, but somehow you did. Yes. See, इसका आंसर बहुत सिंपल है, right? But what is tenacious or what is required is basically a discipline. Then there are savers. A saver is not necessarily an investor. So first, migrate yourself from either being somebody who's very reckless about his money in terms of just spending it, to first actually start saving it and then investing it. अच्छा, okay. Right? Then be realistic about your goals. Like, for example, try and also match this to your own personality, right? So, for example, everybody wants the best car. Everybody wants to buy the latest iPhone. Everybody wants to buy a nice house, right? But if, let's say, the future value of that particular asset is going to be, say, 1 crore or 1.5 crores, or a good car is, say, 20 lakhs. So how are you going to get there, basically? And then when you start saving, you start investing. One example I can give you is, आज के तारीख में, your goals should be at least 7 years away. अच्छा, okay. Okay, because over a 7-year period, the probability of losing money is 0. The probability. Okay. Okay. So if you want to buy a house, think of it. Unless you have a lot of money today, so you can say, okay, fine, मेरे को 3 साल में एक बड़ा घर लेना है, तो अलग बात है. But ideally, if a goal is 7 years away, then the probability of at least losing money has become 0. So the important thing is, before you start spending, first inculcate the discipline of spending less and save a lot more, right? And so a retail investor or any investor basically should essentially start thinking in that particular fashion, right? Okay. And then you go about finding solutions. So I'll give you a good example. You spoke about wealth. How does a retail investor create long-term wealth? That's what you said, right? Yes. So I'll give you a good approach to this. So for us at Growthfinity, essentially what we do basically is thankfully we build ourselves to be very product agnostic. तो हम वो products नहीं बेचते. आज की तारीख में पूरा जनता जनार्दन, I mean I've interviewed more than 400 bankers. Every guy is either selling a PMS or he's selling an EIF or he's selling mutual funds, he's selling insurance, fixed deposit, MLDs, bonds. दुकान लेके घूम रहे हैं. Yes. बस पोर्टफोलियो ऐसे क्रिएट नहीं होता है बॉस, राइट? सो व्हाट वी बेसिकली डू इज वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ essentially something called as risk budgets. So what should be your risk budget? Every individual investor is very different. Everybody comes in, when markets are doing very well, सब आके बोलते हैं बॉस पैसा बनाना है. But when things turn the other way around, how much of a drawdown
can you actually bear? So I'll give you a very simple example. I've asked this question to so many people. आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, मार्केट गिर गया 10%, आपका पोर्टफोलियो भी गिर गया 10%. मार्केट गिर गया 30%, आपका पोर्टफोलियो भी गिर गया 30%. करेक्ट. Now, market went down 50%, your portfolio went down 50%. Where will you start panicking? 30% maybe. Correct. So, I mean, I get very different answers. Yeah. Somebody says 10%, Yeah. somebody says 20%, somebody says 30%. So, what is the level of drawdown can you actually bear in terms of volatility? So, the starting point for you when you're creating your portfolio in alignment to your long-term goals is what should be your risk budget. So, what is risk? How do you define a risk budget? That's where we come in. Okay. So, in the context of who you are in your portfolio, your long-term objectives, you first start designing a risk budget. So, risk is basically defined by standard deviation. Okay. So, अगर आप Nifty 500 देख लें, Nifty 500 का last 5 years का standard deviation है 18%. Right? So, if you want to 100% equity portfolio, so within that 18%, how do you efficiently allocate capital? Right? So we have focused a lot more around efficiencies of capital allocation. अच्छा. Okay. And then we work very hard to find managers in the context of a portfolio. So एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैनेजर देखेंगे जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, राइट, बट उसका वॉल जो है स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम है, तो व्हाट ही इज बेसिकली डूइंग इज ही इज अलाउइंग मी टू टेक रिस्क विद अनदर मैनेजर. So that is how you create portfolio. So that's more about portfolio creation. But to answer your question in terms of for a retail customer, if he wants to create wealth, right, the first thing you have to do is start investing. Okay. So spend less, invest a lot more. It's a simple concept. Yeah. एटलीस्ट स्टार्ट तो करना होगा, राइट? बिल्कुल. दैट्स व्हाट. एंड आपने ये सही बताया, बिकॉज अभी क्या है ना कि राइट नाउ स्पेंडिंग हैबिट्स जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ. आपने देखा होगा रिसेंटली ना, Yeah. जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो Line लग गई थी. 7 out of 10 आईफोन्स आर ऑन EMI. Correct. तो स्पेंडिंग हैबिट्स में तो आपने सही बोला कि एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. मतलब आगे जैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे रास्ता दिख जाता है. Yeah. See, you have to identify yourself first. कि आप हो कौन. So I'll give you some personalities. There is a guy who's a spender. उसको खर्चे करने में मजा आता है. There is a guy who's a debtor. उसको डेट लेने में मजा आता है. He continuously keeps borrowing. Right? Okay. Now, if you are a spender or you are a debtor and you have a goal कि भैया मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, कैसे लोगे बॉस? Right? You have to, get to a point wherein you actually start saving and start investing, and then be very realistic about your goals. Right? Okay. Basically. Okay, understood. And also अभी आपने मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आप देखोगे ना, जब भी इन्वेस्टिंग हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स देर आर सम कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स, ETFs इसकी तरफ ओरिएंटेड होते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ देम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स. और उसमें भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में. और उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये इंटेंशन होता है कि मुझे मल्टी बैगर्स ढूंढना है, कि वहाँ से मतलब छोटे कंपनी में पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए. और उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं ना, दे ओनली फॉलो द स्टॉक प्राइस. स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो खरीदा, स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो बेच दिया, पैनिक होके बेच दिया. Right. एंड इस प्रोसेस में ना व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लूज मनी इन दिस प्रोसेस, बिकॉज अंडरलाइंग कंपनी जो होता है, यूजुअली जो ऐसे छोटे कंपनीज जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फोकस में आते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जो वो देख नहीं पाते. Right. एंड इसको ना पॉपुलरली रेड फ्लैग्स बोला जाता है, राइट? Right. तो अभी अगर कोई स्टॉक पिकिंग करता है तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दे शुड लुक फॉर? प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी मतलब आप इसके एक्सपर्ट हो, कैन यू शेयर सम लाइट ऑन कि क्या रेड फ्लैग्स वो चेक कर सकते हैं? Right. So, again, this is a very good question, right? So, first and foremost, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आती है या आपके पास टाइम नहीं है, राइट, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, तो स्टॉक खरीदो ही मत. स्टॉक में इन्वेस्ट ही मत करो. डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट ही मत करो. अच्छा, राइट. आई थिंक
90-95% of people in India or maybe world over, you know, ब्रोकर ने फोन करके बताया सर ये स्टॉक अच्छा है आप ले लीजिए तो ले लेते, अच्छा, बट क्यों अच्छा है वो कोई रीजन पूछता नहीं है, राइट? एंड मार्केट्स गो थ्रू साइकिल्स, समटाइम्स स्टॉक्स वर्क, समटाइम्स दे डोंट वर्क, राइट? absolutely. एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करो ही मत एज अ रिटेल कस्टमर, Okay. because I mean, look at a guy, someone like a Warren Buffett says, these are weapons of mass destruction. In my last 2 decades of investing, मैंने कभी एक बार futures and option नहीं किया है, करना ही नहीं. जो चीज़ नहीं समझती है वो मत करियो. So first answer to your question is जो चीज़ नहीं समझती है वो मत करो. Okay. मिसाल के तौर पे I'll give you an example. So we keep reading annual reports, we keep reading balance sheets, stuff like that. वो तो हमारा काम है. Right? We've just acquired SEBI's approval to launch our PMS in April. We've gone live with one particular strategy, but we've been doing this for a long period of time, right? Now, one of my good friends, you know, one day called me and he said, "Look, this stock looks very interesting. You know, a consumer-facing company in India, growing 30% year on year, available at a 15 multiple, 15 P ratio. 15 P ratio, right? So the first question would be, ये तो बहुत value stock है. But you should ask yourself कि क्यों है ये 15 का multiple? You're not the only smart guy who identified this. Okay. There are thousands and thousands of smarter investors, I would say, who are looking at that ticker, who are looking at that company. So the first question I always ask myself is that, boss, why is this trading at this particular multiple? I'll give you 2 other nice, very good examples. Okay. So I promised him that, okay, I'll go through the annual report and I'll come back to you, or the balance sheet. Sorry, the annual report, and I'll come back to you. 15 P वाला stock. हाँ जी. अच्छा, okay. तो मैंने एक सैटरडे संडे निकाला, 3 साल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया एंड आई वेंट थ्रू इट. तो नोट्स टू द अकाउंट से मैंने एक नंबर देखा कंसिस्टेंटली आ रहा था. Notes and accounts. नोट्स टू द अकाउंट्स Notes to the accounts में, okay. कि दिस कंपनी इज स्पेंडिंग 130 crores on furnitures and fixtures every year. अच्छा. Every year 130 crores on Furnitures and fixtures. ये furnitures and fixtures अगर क्या होता है एक retail investor के लिए? If they So want to invest? वो कंपनी का बिजनेस जिम्नेशियम, राइट? सो जिम्नेशियम में अगर इफ दे आर बाइंग इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल, so that was furnitures and fixtures. अच्छा, right? okay. Or it could be anything else, like Okay. they were setting up a spa or whatever, right? Now that to me was a red flag. Okay. So I called up a friend of mine who had a franchise of a gold gym here in Mumbai, and I asked him, boss, you know, how much did it cost you to set up this gym? So he said, करीब 1 crore रुपए लग गया. So I asked him, what is तेरा furnitures और fixtures में कितना पैसा जाता है? So he told me वो क्या है? अच्छा. So that was a red flag for me, right? Obviously, that one particular stock initially did very well, went from 250 to 350, and then somewhere I think there were, you know, obviously some corporate governance issues that came out, and the stock is down to 2 rupees, right? 2 rupees. 2 रुपया हो गया. Okay. So अगर आपके पास ये ability नहीं है, Okay. okay, so then you're playing with fire, right? Basically आपका hard earned पैसा है. देखो बॉस, मैं ये चीज़ हर एक कस्टमर को बोलता हूँ. I meet clients who have 100 crores, I meet clients who have 1 crore, I meet clients who are 10 lakhs. मतलब हर किस्म के लोग को मिलते हैं हम, राइट? बॉस, पैसा हम सब मेहनत से बनाते हैं. You and me work very hard to earn our money, right? So इसको अच्छी तरह से channelize करो, Correct. right? आप you go to if you have a, you know, people give this example, but it's a true example. Yes. अगर आप बीमार हो and you need a specialist, the specialist is going to charge you money. He's not going to give you advice in free. Yes, yes. उसने बरसों मेहनत करके वो वहाँ पहुँचा है, right? So you decide whether you want to go to a GP or a specialist, right? अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी तो आप लोकल जीपी के पास चले जाते हो, बट इफ यू हैव समथिंग सीरियस देन यू गो टू अ स्पेशलिस्ट, राइट? That is what you know our business is all about. So find someone whom you think you can trust, right? But the important thing to look for, I mean, I've written a long blog on what do you look for in a wealth manager also, right? Okay. The experience counts, right? The ability to not push products onto you is very important. I mean, again, you know, the worst place to go and do wealth is go to a bank. अच्छा, okay. Because वो RM आपको सिर्फ इंश्योरेंस चिपकाता है, वो आपको सब कुछ चिपकाता है. Basically, their job is to just sell you things, Sell you things, right? yes.
That's not how you create a portfolio. Portfolio needs to be created with some science, with some basic science around it, in terms of, like I said, what should be my risk budget? Yes. How should I efficiently allocate capital? How should it be tax efficient? And then how do I find managers in the context of a portfolio? Again, I'll go to the other point that you spoke about red flags. This is not necessarily a red flag, but see, the way we look at companies and the way we look at portfolios. So we have two businesses. एक तो wealth है और दूसरा PMS division है, right? Now wealth में हम यही करते हैं. हम सिर्फ 2 या 3 चीज करते हैं. हम क्लाइंट का रिस्क बजट बनाते हैं, हम उसका कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, एंड देन वी फाइंड मैनेजर्स ईदर वाया म्यूचुअल फंड्स, PMS और AIF. एक सिंपल थर्म रूल रखा है, आर एलोकेशन टू वन मैनेजर इज नॉट मोर देन 12 to 17%. Okay. तो अगर आप 5 करोड़ नहीं पहुंचते हो तो भैया PMS मत खरीदो. Right? Yes. First, create that bucket of a nice little portfolio of say 5 crores, because 12% of that is 60 lakhs, जितना आपने को मिनिमम चेक PMS में डालना है. Yes. अब जब तक 10 करोड़ नहीं पहुंचते हो, आप AIF मत खरीदिए. So don't be on the hunt for products, right? You should be on the hunt for better, efficiency on capital allocation, right? So again, मैं आपको एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, right? I'm not sure whether you know the answer or you will have the answer, but if you come to me and you tell me, look, I have enough wealth and I want a very balanced portfolio. So what should be your risk budget? Very low. Already पैसा है. Correct. Right? So your objective is basically I want to grow my wealth, and yet I want some downside protection. Yes. Right? So if the standard deviation of the Nifty is 18%, so let's say your risk budget could be 40% lesser than the market risk. So at that market risk, how do you allocate capital? Acha. That is the key, in a tax efficient way. Tax efficient way in the sense? So if you look at bonds, so basically your fixed income allocation can come via bonds, can come via MLDs, can come via credit funds, AIFs, that entire real estate fund, बहुत बड़ी कैटेगरी है, and अच्छा काम कर रहे लोग, ऐसा नहीं है, but हमको वो नहीं समझता, right? एक simple example देता हूँ मैं. People are chasing credit, people are chasing yields. आज 10-year bond is around 6.5%. Around. Right? Inflation आज के तारीख में 1% है, but average inflation अगर आप समझो अगर 5 to 6% लेते हो, right? So inflation eats into your capital over a period of time. तो आपको लगता है हमारा capital safe है fixed deposit में या bonds में, but actually you're eroding your capital. Yes. Right? So the market automatically move कर गया in chase of credit, in search for credit कि भैया हमको 8% मिले, 10% मिले, 12% मिले, 14% मिले. So there is a huge industry which has got set up, right? Now the challenge that we face there, for me, what is important is that we built in my previous role, we built India's largest private sector pension fund business. So I was the head of the group gratuity and superannuation business at Birla Sun Life Insurance, right? There we are collecting money from companies like Infosys, Wipro, IBM, Oracle, and big money, right? Which is more long-term in nature. So the first thing what I've learned and I've taught myself is that if I have lent money to you as a creditor, right? I want to see a history of 10 years of my principal and interest coming back to me on time. Okay. Right? होगा, मैंने तो नहीं देखा बॉस. Okay? ये क्वेश्चन हम बहुत we asked a lot of fund houses that come to us with these credit funds and so on and so forth. तो अगर वो नहीं है, तो then that's a risk. Okay? Which I'm not able to ascertain. Okay. Second is, assuming that I get my 14% promised to me on time, right? The fund manager keeps, between the fund manager and the wealth manager, they keep 2 to 3%.
Now you've taken the credit risk, reinvestment risk, duration risk, Understood. और आपको ग्रॉस रिटर्न मिला पोस्ट फीस से 11%. Then there's a tax on it, which is between 35 to 40%. तो नेट ऑफ टैक्स आपको मिलता है 7 to 8% or 8 to 10%. Okay. Right? There are beautiful solutions available within mutual funds which will give you similar returns, at least who have the history of giving you similar returns, which are fully liquid. Now they don't pay you as much, Okay. Okay. right? So the world loves selling the other products which are high commissions and so on and so forth. We've not gone on that path. Yes, We are okay earning less. For us, protecting the client's capital, allocating it efficiently is more important. Now, give you another good example. Now you spoke about red flags, right? Retail investors. Okay, भैया ये लोग stocks लेते हैं, Yes. Yes. right? Now, see, what happens is, now let's take the example of paint as an industry, right? Now we all know there is only one leader. Asian Right. Paints. I wouldn't name them, Okay. but there's only one leader, Yeah. right? Okay. Now, historically, this company has generated insane amount of return on capital. Okay, it's very natural for the big boys to then start looking at that particular segment, and it will face competition. Every industry where there is one leader, that leader will attract competition, Correct. right? Yes. So you have a lot of other guys who got into that particular segment primarily because that business was a cash flow generating business, and huge return on capital, right? So the big boys will say, okay, even if I get 20, 30%, 40% market share of from, this one guy, it's good money for us, right? Now, there are two things that happen normally. Any industry, when it attracts competition or when the industry expands by more players, either the industry expands, okay, or the demand goes through the roof, or the demand doesn't go through, but the leader starts losing market share, Yes. Okay. right? So the worst place to be in is you have a company which is probably losing market share, and his P is getting derated. Okay. Okay. So you're going to face the brunt of, both, all right? Loss of market share and a P derating. Okay. Now let's look at the other segment, like an insurance, for example. Acha. Okay. Okay. Now there was one leader. Okay. 20, 30 insurance companies got in. So I can name it. That leader is LIC, right? For Yeah. time. Okay. I mean, my dad used to work there, so. Yes. Yes. Everybody has a LIC insurance kind of that time. But so the important thing is now what happened there is the industry expanded. Okay. Because as 20 people got in, they started advertising, like automatically the leader also started getting leads, Oh, okay. right? Now there the important thing to understand is that is the leader a great efficient, investment for me or his competitors? जो upcoming अभी आ रहा है. Right? हाँ, Okay. correct, right? So I think for a retail investor, it's not just about phone आया, ये स्टॉक अच्छा लगता है ले लीजिए. Yes. अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि भैया एटलीस्ट दैट्स द वे आई थिंक कि आप एनुअल रिपोर्ट ओपन करिए, आप उसकी कमेंट्री देखिए, आप नोट्स टू द अकाउंट्स देखिए, उसका ऑडिटर कौन है, लाइक दैट एग्जांपल विच आई टोल्ड यू, राइट? उसमें अगर एक ऑडिटर है तो आप फाइंड आउट कीजिए इज ही एन ऑडिटर टू सो मेनी अदर कंपनीज, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, Okay. Okay. राइट? पोटेंशियली आई एम सेइंग, राइट? अच्छा. सो मतलब ऑडिटर का भी रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली. Yes. Okay. Obviously, like who are the bankers, right? These are things which are important. Like you will see some companies जिधर 10 बैंक है, जरूरत ही नहीं है. और एक्चुअली ना आई विल आस्क वन फॉलो अप क्वेश्चन हियर. Yeah. तो बहुत बार मैंने देखा है कि जो कुछ कंपनीज होते हैं ना, तो वहाँ पर कोई बड़ा ऑडिटर होता है, राइट? वेल नोन नेम ऑडिटर, लाइक PCW है या कोई डेलॉयट काइंड ऑफ कंपनी है. तो वो क्या करते हैं, वो सडनली दे रिजाइन. वो बोलते हैं कि हम इसका ऑडिट नहीं करेंगे. Right. मतलब ये ऑफकोर्स पब्लिक कंपनी में होता है, तो पब्लिक मतलब वो फाइल भी करते हैं ना NSE BSE Yes, रिपोर्ट. उसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसा ऑडिटर आता है जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं होता है. Right. तो इज दिस अ रेड फ्लैग? कोई नामी ऑडिटर जा रहा है, कोई ऐसा ऑडिटर आ रहा है जिसका नाम हमने सुना भी नहीं है. Yeah. See, all changes are for the good or for the worse. You have to assess. ओके. It's not necessarily a red flag, but it's a change.
ओके एक और इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर ऑडिटर बैक टू बैक 5 इयर्स में 2-3 ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं, राइट, सो हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन So छोटे avoid- कंपनी में? जस्ट अवॉइड द स्टॉक. अच्छा ओके. सो अभी तक जस्ट टू समराइज, रेड फ्लैग्स में हमने डिस्कस किया कि अगर बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो एक्सपेंस का जो ये होता है ना कि जैसे कि आपने फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स का बताया, अगर ऐसे एक्सपेंसेस सडनली अगर कंसिस्टेंटली ज़्यादा है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स या मतलब जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट कुड बी अ रेड फ्लैग दैट वी हैव टू लुक एट इट, राइट? सो दिस Yeah, इज many such things. many such basically. things. So this is one. Like एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. There is a company which I was watching. Obviously, the stock's done very well, Okay. right? अब उसका trade receivable Trade receivables. Okay. is more than a year, Okay. right? He's competing with one of the biggest adhesives company. अच्छा. Okay. Okay. So, but इस कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, सेल्स बढ़ गया है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल इज मोर देन 400 डेज. एग्जाम्पल की तरह से, राइट? तो ऑब्वियसली व्हाट दैट मीन्स इज ही इज हैप्पी सेलिंग हिज गुड्स बट इज नॉट गेटिंग द मनी. मतलब Right. simplify- कैश फ्लो नहीं है. अच्छा ओके. तो एक्चुअली ना ये दिस इज ये जो आपने प्रॉब्लम बताया ना, मोस्ट ऑफ द छोटे कंपनीज के साथ यही प्रॉब्लम है. सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर का पॉइंट है ना वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ पे ही आता है कि देख रहा है कि नो, sales- रिटेल इन्वेस्टर लुक्स एट द स्टॉक. ना, stock- शेयर बढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है. नहीं, बट stock देयर आर भी रीजंस बढ़ता व्हाई स्टॉक्स गो अप आल्सो. ऐसा Yes, नहीं yes, है. of course. See, I mean, every time earning season ends, right, there are stocks which do very well based on, the numbers that the companies have delivered, or the commentary is very positive, right? There are times when the numbers haven't come through, but the commentary is positive. There are times when the numbers have come through, but the stock price corrects. Yes, right? Because the markets may have priced way too much ahead of earnings, and then the stock price corrects, right? So, if there is a mutual fund manager or a PMS manager or an AF manager जिसका काम ही है रोज करना, you're better off giving money to him, rather than you thinking trying to do ये क्या होना. I mean, if you listen to Peter Lynch's interview, he said a very nice thing. He said, "Do you know? I know this was one of your questions, or this could come up, saying where are interest rates headed?" He said, "Even the Fed doesn't know," which is a fact. Yeah, actually. I mean, today if I ask the RBI governor, okay, sir, do you know 2 years down the line or 3 years down the line what will be the interest rates? He doesn't know. So why do you want to predict, right? You look at Buffett, for example. Okay, he's not predicting what this company could likely be 2 years, 3 years, 5 years down the line. किसी को पता नहीं है, right? The whole objective is that you assess the business on the basis of its tailwinds, on the basis of the management, and then you make a informed decision in terms of, okay, this I think is a fair price to pay. Understand, ये yes. प्राइस फेयर है कि भैया हम ये शेयर ले सकते हैं, राइट? आई कैन टॉक अबाउट व्हाट वी डू. हम क्या करते हैं बेसिकली. सो बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई ओन मनी, राइट? मेरे पास 2 चॉइस था, इधर मैं खुद करूँ और आई गो टू वेल्थ मैनेजर. मेरे पास टाइम था उस टाइम. आई वेंट थ्रू एटलीस्ट 200 बुक्स अराउंड इन्वेस्टिंग, एंड आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दैट आई रियलाइज देयर इज ओनली वन थिंग. एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन अ बिजनेस, विच इज व्हाट इज दिस बिजनेस इज इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल. इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है? सो इफ योर रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ योर बिजनेस शुड बी हायर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो अगर आज के तारीख में अगर आप इंडिया में देखेंगे, नॉर्मल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट इक्विटी लेके बिटवीन 10 to 12%, डिपेंडिंग ऑन वेयर बॉन्ड रेट्स आर, बॉन्ड यील्ड्स आर, राइट? So a company has to consistently generate and show you, demonstrate that its return on capital is higher than the cost of capital. I mean, it's like a simple example देता हूँ. अगर आप, if you are a businessman, आपकी दुकान है और आपने बैंक से बोरो किया है 10% में, राइट? और अगर आपको रिटर्न 6% मिल रहा है तो 4% आपके घर से आ रहा है, लॉस हो रहा है. हाँ. right? So your return on capital has to be higher than your cost of capital. Simple. Okay. Right? Now, what I realize is that these companies which have consistently demonstrated that are leaders. Okay. So then I started identifying that what is the moat around this leadership. Matlab, what is the competitive advantage? So for example, some companies have product leadership. Some companies have cost leadership.
Some companies have network leadership. Okay. Some companies have a profit share leadership. Some companies have a market share leadership. So when you start thinking, what is it then driving this particular leadership, you start getting a lot of answers, basically. And then you focus around the quality of the management. Whatever they come and say. बहुत ही अच्छा example देता हूँ मैं आपको. There was a company that I used to track many years back in the aromatics business. When that business was doing well, the MD and CEO used to come on the con call Okay. and he used to answer all questions. Oh, अच्छा. Okay. Okay, after 2 years, the company went through its own challenges. Right, they did capex किया, demand चला गया, capex किया था, borrow किया था, all of that happened, right? Basically, the MD stopped coming on the con call. मतलब आता था, लेकिन सारे questions जो आते थे, CFO आप बताइए, अच्छा. CEO आप बताइए इसका जवाब. So that's again another red flag. कि this guy is not taking ownership Yes. of a business. Yes. Well, I am the CEO. I'm the MD and CEO of this company. I am responsible to my shareholders. To me, I thought he's just passing the buck. अच्छा. Okay. इसको avoid करो फिर. Right? Okay. That's the nature of that particular person, right? So these are things which are these are very small, but बहुत important है. ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? Right? सही बात है. He's just passing the buck. That's the way I thought, at least. मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए. बिल्कुल. लीडरशिप के क्वालिटीज ऐसे होते हैं वो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी गलती करोगे. There is no two doubts about it. We are all humans. We are prone to make mistakes. But the fact is, how do you move ahead? Right? Basically. So that quality of the management is very important. Right? Okay. The thought process, clarity of thought is very important. वो आ जाता है, अपने आप आ जाता है. अब आपको I'll give you another good example. India's largest what is it? They make these home cooling machines. Okay, you read their annual report. They are management lessons, boss. Okay. You get to know the guy's thinking. When I was going through this several years back, he said my competition is not the air conditioner. अच्छा. My competition is that pankha. I am replacing the fans. Okay. Now you just think of the guy's thinking, thought process, and the demand. Okay. He's India's largest home air cooling business. Right? Now the business will go through its own cyclicality. Right? For example, गर्मी कम हो गई तो AC और coolers बिकेंगे नहीं, which is fine. But the guy's thinking is outstanding. And the way it's represented in the annual report, the story, the narrative, it could be great marketing, right? But the way it's narrative, and then you say, okay, fine, is it reflecting in the numbers? No, it's not that the company hadn't made mistakes. It made mistakes. It's bought acquisitions abroad, which hasn't worked. वो सब होते रहेगा. But then it's up to you to assess what is a fair price to pay for a great business. Okay. यानी so far अभी हमने जो डिस्कशन किया है ना, so पहले तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, विजन होना चाहिए. Correct. और वो विजन नंबर्स में दिखना चाहिए, सेल्स प्रॉफिट्स में. एंड आपने रेड फ्लैग्स में भी डिस्कस Capital allocation. कैपिटल एलोकेशन में. बहुत important. How am I allocating capital? ओके. और ये कैपिटल एलोकेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं वेदर इट इज एफिशिएंट और नॉट, कि कंपनी का कैपिटल एलोकेशन? There are many ways. You look at the peers in the industry. अच्छा. You look at companies globally, okay. right? And you'll get a fair sense के ये industry में Yes. This is what it is now. If there is a company which is consistently delivering a better operating margin, there's something right? Okay. Okay. Like I said, cost leadership. Yes. Right? Understand. So if he's delivering a better operating margin, his net profit margin is better. Then it also means that there are huge entry barriers. Okay. Right? He has some monopoly. He has something which he's doing right. Okay. So any स्टॉक पिकिंग में वही मतलब राइट नाउ मैनेजमेंट, और उसके बाद जो मैनेजमेंट का जो विजन है वो नंबर्स में दिखना चाहिए. एंड नंबर्स में अपने सेल्स प्रॉफिट, नॉट ओनली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है वो चेक करना है. बैलेंस शीट में जो मतलब हम देख रहे थे ना, जो फिक्चर्स का बता रहे थे. आप रिटर्न ऑन कैपिटल से स्टार्ट करिए भैया. ये धंधे का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ओके. और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है इन्वेस्टर्स को? That it's higher than the cost of capital, which means essentially he's not losing money. Okay. So return on capital employed. And also apart from that, अभी आप मोड्स के बारे में आप बता रहे थे ना कि किसी कंपनी का एडवांटेज है. एंड ऑल्सो यू गेव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस पेंट का इंडस्ट्री आपने दिया
कि वहाँ पर ऑलरेडी सब पेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट काइंड ऑफ लाइक सैचुरेटेड है और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स घुस रहे हैं. सो जिसकी वजह से लाइक यू नो द पर्सन हु हैज़ एवरीथिंग हैज़ अ लॉट टू लूज, बट जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं दे हैव लॉट टू गेन. बट ऑन द अदर हैंड इंश्योरेंस का आपने बताया ना कि वहाँ पर मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, पेनिट्रेशन बहुत कम था, तो इसकी वजह से वहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं तो, राइट? Correct. No, even in the first instance, the market could have expanded. ऐसा नहीं है that the market, but the market hasn't expanded. अच्छा, So the leader is losing some market share, right? okay, understood. Basically. तो वैसे ही अगर मोड्स अगर हमें एनालाइज करना है किसी कंपनी का कि इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? So, for example, let's look at the largest PSU bank. What is its moat? 10,000 branches. डिस्ट्रीब्यूशन. Huge. वो दिन में एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा, 10,000 पॉलिसी रोज बेच सकता है. ओके. Now you compare that stock price to say another real estate firm which has an insurance company, right? दोनों में difference. The market has compounded, has given a higher multiple to the guy who has 10,000 branches. Okay. 10,000 branches is a huge moat, boss. So distribution could be one of the modes. It's a moat. Okay. And also distribution, अब ये तो हो गया, मतलब छोटे कंपनीज जो होते हैं ना, अगर स्मॉल कैप है, ये है, उसमें से अगर आप बैलेंस शीट में या पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर, या मतलब मैनेजमेंट में भी हो सकता है. Because without meeting the management in a small cap company, आप वो स्टॉक खरीदे ही मत. ओके. और अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है तो इट्स बेटर यू गो टू अ फंड मैनेजर जिसका काम है जो रोज वो करता है. ओके. बिकॉज नंबर्स में मतलब व्हाट यू से लाइक See, small cap has been well defined, right? After the 150, after the 250th company, 251st to 500 companies are all small cap by way of market cap. But the universe is a lot larger than that. Do you know how many companies in India make 100 crores of pact? We have 4,500 companies, correct, in India. How many companies are doing 800 crores of pact? आपको पता है? 100 करोड़ साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. कितनी कंपनी होगी? नो आइडिया. Around 800 companies. अच्छा, ओके. Right? In US, out of the listed universe, there are 2,000 companies. So India is not far. ओके. I mean, India has done phenomenally well. Even a large market like a US, if there are 2,000 companies, and in India you have 800 companies, right? But beyond those 800 companies, companies do profit after tax of at least less than 100 crores. ओके. Now, अगर small cap है, I can tell you, I'm part of good networks, right? My good friend runs a very good network, right? So, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं यार. They travel all of India, मैनेजमेंट को मिलते, धंधा समझते हैं, राइट? अगर आपके पास ये करने की क्षमता नहीं है या कैपेबिलिटी टाइम नहीं है तो देन यू आर प्लेइंग विद फायर. आई एम टेलिंग यू इट्स बेटर टू गो टू अ फंड मैनेजर और अ वेल आउटफिट लाइक आस सेइंग सर प्लीज मुझे हेल्प करिए, दिस इज माय गोल, हाउ डू आई अचीव इट सिस्टमैटिकली. अंडरस्टूड. ओके. एंड ऑल्सो आप डू यू स्टडी वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुंझुनवाला, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को आप स्टडी करते हैं? I've read the books. So, right? उसमें ना आपने जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, उसमें आपको क्या लगता है कि why these investors are so सक्सेसफुल and why others were not able to achieve the success level what they have achieved? मतलब कुछ तो कर रहे होंगे वो ऐसा, या मतलब इन जनरल आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में जो क्वालिटी देखते हैं? See, the thing that just two lessons there. Basically, one is if you look at Buffett or a Munger, they've said one very nice thing. I think Peter Lynch or I'm forgetting. There's another interesting guy I read. They've said, "Boss, don't invest in things that you don't understand." Yes. तो जो चीज़ की समझ ही नहीं है उसमें आपको क्यों हाथ डालना है, right? That's what. And if you look at the others, right? The simplest answer to creating wealth over the long term is you need stomach for volatility. Okay. Now it's very easy to say, oh, this guy has
invested 6 crores, say, for example, in a company like Titan and has become 12-13,000 crores. But I'm sure that stock has seen a 50% drawdown at least 5 times. Yes. So as long as you know that, it's a great business, large opportunity, run by a very efficient management, then just hold on to it, right? ओके एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ना एक्चुअली ये आपने बताया ना एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि सम पीपल लाइक ऑलमोस्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल दे फाइंड गुड स्टॉक्स बट द थिंग इज दैट दे डोंट स्टे इन्वेस्टेड मतलब स्टॉक 20% गिर गया पैनिक होके बेच दिया 30% गिर गया पैनिक होके बेच दिया एंड प्रॉब्लम वहाँ पर आता है कि अगर ऑलरेडी मान लो किसी ने इन्वेस्ट किया एंड उस स्टॉक का मान लीजिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट सब कुछ बिजनेस है इफ़ दैट स्टॉक कैन मे बी लाइक मार्केट कैप 5 गुना 6 गुना हो सकता है तो वो क्या करते हैं 20% गेन मिलने पे ही अगर 10% Yeah, people, what you're trying to say is that mostly people, keep the losers and sell the winners. यस That's what they do. ये कैसे अवॉइड करना है मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यार इसको नहीं अभी गिरा है स्टॉक प्राइस गिर रहा है लेकिन कंपनी अच्छा है वो कैसे डिसाइड करना है So मैंने इसका सिंपल आपको एग्जांपल दे दिया था. Like look at the return on capital employed. Simple answer. अच्छा ओके आज screener.in पे जाएंगे आपको 5,000-6,000 रुपीज में those guys are giving membership. So for a retail customer बहुत सिंपल है आप स्क्रीनर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनर में आप लुक एट द नंबर्स टॉप लाइन ग्रोथ देखिए उसका ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज देखिए गिर रहा है या बढ़ रहा है उसको एनालाइज करिए क्यों गिर रहा है या क्यों बढ़ रहा है इट गिव्स यू ऑल द डेटा इसका आरओसी क्या है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है तो एक आइडिया आ जाएगा आपको देन यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स टू गो एंड एक्चुअली see, right? Like, for example, that company which I told you, which is competing with one of the largest adhesives company, his return on capital is very high. But if you go to the cash flow, on a sale of, I don't know the exact number, but on a very large sale number, his free cash flow from operation was 2 crores. आज के तारीख में एक इंडिविजुअल की सैलरी है CEO, गुड CEO इन इंडिया गेट्स 2 crores in a year. तो ये पूरा कंपनी इतना बड़ा व्यापार बना के बैठा है लेकिन उसका फ्री कैश फ्लो वाज ओनली 2 crores. देन समथिंग इज रॉन्ग राइट समथिंग इज नॉट राइट बेसिकली यू हैव टू एनालाइज एंड उसी के लिए यू हैव टू गो मीट द मैनेजमेंट और अंडरस्टैंड और गो थ्रू द कॉन कॉल्स गो थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट्स अगर ये सब काम है अगर ये सब आपके पास करने की कैपेबिलिटी टाइम अंडरस्टैंडिंग है तो आप स्टॉक खरीदिए वरना आप बेटर है कि गो टू अ वेल्थ आउटफिट और गो टू अ फंड मैनेजर एंड लेट हिम अलाउ टू मैनेज हिज take मनी their help yes absolutely एंड अभी ना राइट नाउ ये एक जनरल थॉट चलता है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट हुआ है राइट सो इफ़ यू से लाइक फॉर इफ़ यू टेक अ नेक्स्ट डेकेड पॉइंट ऑफ व्यू सो वेयर शुड इन्वेस्टर्स फोकस कि कहाँ पर ग्रोथ हो सकता है इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी अगर होगा तो बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जहाँ पर ग्रोथ आ सकता है तो डू यू सी एनी सेगमेंट्स जहाँ पर ग्रोथ हो सकता है अच्छा See, I don't think I would like to, guess that, right? Because this keeps changing. मैं आज कुछ बोलूँगा, कल कुछ और हो जाएगा, yes right? So I think मैं आपको बहुत simple logic देता हूँ बस. India has a population of 1.4 billion people, and we are hungry to succeed. We have a great leadership at the center, which has done, I would say, remarkably well over the last decade. In terms of putting a lot of things in place, right? So India में अगर आप बॉम्बे में आएंगे हर एक जगह अपॉर्चुनिटी है रास्ते खराब है तो रास्ते ठीक करो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो एंड आई वुड से द सेम थिंग pan India, right? Basically, yes whether it's ports, whether it's airports, and so on and so forth. And you have 1.4 billion people who are waking up every day in the morning, who are consuming something, and then they go to sleep. that's Right? true yes So, and you will always find great entrepreneurs who find that as an opportunity and are willing to put that hard work to do very well to serve the community and to serve themselves. okay Right? So, I'll give you another good corollary. Let's look at the US markets. So, there are two markets that you should never ignore. One is the US markets and the other is the Indian market. Right? Now, if you look at the US markets, right, they build capabilities to service the whole world. Are there
Indian companies which have built similar capabilities. So not only are they servicing the domestic market, but they also are looking at opportunities globally. Right? It could be anywhere. It could be in Africa. It could be in the US. It could be Europe. It could be Australia. It could be APAC. But think about it. Right? Are there companies which are doing that on a consistent basis? Right? So it's not about a particular sector. रोज नई नई थी आएगी भारत. Okay, everybody is going to say something or the other. For you, what is important is what do I understand, right? Okay. And for example, मुझे कभी pharma generic business समझा ही नहीं है, क्योंकि it's a copycat business, right? There's a patent which has expired, right? And you copied that patent and you build. Yes. And you're selling it at a low cost. But there is a moat, right? That moat is cost leadership. So even if you've not understood, right, then the important thing is to go into the elements of the APIs, go into the elements of, what is this guy manufacturing, Yes, correct? yes. And look at the scale, look at the return on capital of that business. It's huge. And that's why, on an average, if you look at the oldest pharma fund, it has compounded at 28%, if I'm not mistaken. That's great money, boss. Yes. So why do you want to apply that head and say, boss, मुझे ये stock लेना है या Dr. Reddy's लेना है या Cipla लेना है या Pfizer लेना है या XYZ, right? Basically. Okay, understood. Yes. And also अभी आप देखोगे ना तो what is the most मतलब जो common mistakes आप देखते हो retail investors करते हैं जिसकी वजह से उनका wealth destroy होता है. Right. What are those common mistakes? Quite a few, but I can name a few. The first mistake is I started with a certain goal and then suddenly in between मैंने change कर दिया. Okay. Like, वो gold ऊपर जा रहा है, silver ऊपर जा रहा है, चलो लेते हैं. Okay. Common mistake. There's a FOMO. Yes. Right? Second is all of a sudden you would decide कि चलो यार एक नई गाड़ी ले लेते हैं. You were saving for a house, or you were saving for your child's education, but all of a sudden in between you say चलो let's buy a car. ये गाड़ी अच्छी है. Yes. Right? So things like these, basically. Okay. Right? Okay. Like I said, another mistake could be I sell my winners and I keep on holding on to my losers. Yes. Right? Then another mistake could be, doing futures and options without even understanding what that animal is. Yes. I mean, I was in Delhi last month, and one of my clients sent me his car to pick up. Okay. Okay, and his driver was sitting with 2 laptops. I said, sitting with two two laptop driver. Okay. I said, आप लैपटॉप लेके क्या कर रहे हो? सर मैं ऑप्शंस करता हूँ. Okay. तो आपने ये भी पूछा कि पैसे कमा रहे हो कि कमा रहे हो? I mean, the fact that he had 2 laptops and he was doing it consistently, maybe he was making money, but then that's the state, right? No. I mean, I wish him all the best. Yes. But I think for most of the people, it's like playing with fire. Understood. Okay. And you have any opinion on gold? Because gold right now भी gold के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है. Yeah, my opinion is very simple. You should always have gold in your portfolio. Okay. Say maybe to the extent of 10% of your portfolio. See, gold is a hedge against inflation. It's a hedge against volatility, right? Okay. Sadly, or good for people, or especially all the women household, who say आप जो पति को बोलते हैं और आपको कुछ पता नहीं है बॉस, हम तो गोल्ड खरीदेंगे, right? It's done better than large caps over the last decade. So it's good. Actually ना मैं एक WhatsApp पे एक जोक आया हुआ था. That was saying that कि घर में सब मतलब इन्वेस्टिंग ये वो कर रहे हैं, like बच्चे हस्बैंड सब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, बट सबसे बड़े विनर्स निकले मम्मी लोग जिनके पास गोल्ड है. Correct. It's not a joke. It's actually a fact. True. Yeah. Okay. तो अभी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हो ना, जैसे कि अभी आपने बताया इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कैसे अफेक्ट करता है? यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट? ओके, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? एंड आई डोंट हैव टू मच ऑफ अ नॉलेज फॉर इट, बट वी आर प्रोबेबली दैट 1% ऑफ द वेल्थ फर्म्स इन इंडिया जो हु अंडरस्टैंड्स अ लॉट अराउंड फैक्टर इन्वेस्टिंग.
सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी कॉमन सेंस परस्पेक्टिव, जहाँ मुझे समझ है. लेट्स से यू वेंट टू द बैंक इन जापान और इन द यूएस एंड यू वांटेड टू बोरो मनी, and interest rates in Japan for years were 0%, right? Or in the US were virtually 0%. तो उन्होंने आपको 3% पे लैंड कर दिया, तो आपने वो पैसा बोरो किया. ओके, Where will you invest it? जहाँ पर उससे ज़्यादा रिटर्न मिले. Correct, but within that, where will you invest? You look for good quality businesses to invest, right? So if you look at that cycle from 2009, quality as a factor did phenomenally well till 2021. So you had fund managers who had those biases towards quality. They all became kings. मतलब क्वालिटी बिजनेसेस. Quality as a factor, which is high ROE, high return on capital. अच्छा, ओके. क्वालिटी बिजनेस इन द सेंस हाई ROE, High ROE, high return on capital. Okay. So money will always chase good businesses. Within good businesses, because there's a cost which was virtually nothing, right? So it's very natural for an investor to then first start. You look at the margin of safety, right? Now that cost from 0% went to 5.5%. The Fed came and the Fed came and he increased the rates to 5.5%. So what will you chase then? The guy who has the habit of borrowing and buying stocks or leveraging on stocks, he started looking for value. This is a record, I'm telling you, that value has done as a factor, has done so well for the last, consistently from 21, 22, 23, 24, 25. So value is low price to earnings, low price to book, low price to sales, because your cost of borrowing has gone up. ओके. So when you start looking at this, so we identified this trend very early. हमने बहुत पहले recognize कर दिया था. So what we do is, that's why I said, man, एक तो आपका capital efficiency, कि मेरा risk budget क्या है, and how do I efficiently allocate capital, और फिर मैं किसको कितना दूँ. That sizing is very important. So when we meet managers, so we follow a quantitative and a qualitative ranking. तो जब हम managers को मिलते हैं, we also try and assess his bend. कि is this guy a very value oriented guy, right? So most fund managers in India are basically GARP investors. So they look at growth at reasonable price. हम आपको आगे सब आपकी strategy क्या है? We are growth at reasonable price. Okay. But there are very few who are disciplined who are very, very value-oriented guys. Okay. Okay, they want a huge margin of safety, right? So when we saw that our view was that interest rates should start moving up from here, we basically then started doing a lot of correlations with value as a factor. So I'll give you an example. If you look at HDFC Top 100, which is now a HDFC Large Cap Fund, every time value has done well, that fund has done well. Okay. So that gives you an idea that maybe this guy's style, the fund style, is more of a value-oriented guy. Okay. Right? Okay. Ultimately, they are also looking at growth. It's not just value. Yes. Right? But it's been unprecedented. Now, by doing this, we've helped find those kind of funds or fund managers within a portfolio. So at 18% standard deviation, how do you in principally allocate capital and how do you find these managers? So अगर आप PMS बाजार देखेंगे, for example, there is a fund manager which I think in the last 5 years has compounded at 53%. Brilliant. Okay. It's insane, right? Now, this guy when he started his business in 2018, अगर आपने उसको 10 करोड़ दिया होता, he first made it 3 crores. Oh, okay. So he's drawdown. It's not his problem, Market. Small cap investor, caught in the wrong cycle. So from 2018 to March 2020, his fund saw 70% drawdown. Now to go from 3 crores to 100 crores, you need a 300% return. Yes. Right? So that is why the importance of the risk budget. So it's not that, but he's recovered. I mean, he's compounded the last 5 years at an insane rate. Right? Post-COVID, his fund is done very well. So when he came to meet us, I think 2.5, 3 years back, today I think they manage more than 1,000 crores. But जब वो हमको मिलने आया था, से 2-2.5 साल पहले,
he had 130 crores. And that year his return was 80%. So the first question I asked him is that, boss, which means you had 60 crores. 60 का 130 हो गया. Why do you have with this performance only 60 crores? So for us, whether we look at an alternate manager on the PMS or the AIF side, we start looking at the return series from day one. We want to see quarterly portfolios and the return series. So we get a good sense of, drawdowns, the up capture and the down capture. But how is this guy managing this capital? अच्छा, okay. And then you try and fit him in the context of a portfolio. Understood. So the way to see macros or the way to see, like I said, even the RBI governor will not know कि 2 साल 3 साल का क्या इंटरेस्टेड होगा, right? But you have a good sense of the trajectory. तो अगर आप इसको थोड़ा सा समराइज करना चाहो सिंपल वर्ड्स में, Yeah. कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं या इंटरेस्ट मतलब जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, Correct. तो कौन से पैरामीटर्स अच्छे करते हैं, कंपनीज विद पैरामीटर्स अच्छे करते हैं, और कौन से पैरामीटर्स लोअर इंटरेस्ट रेट में अच्छे करते हैं, जो आपने बताया उसको अगर आप समराइज करना चाहो तो इसका जवाब सिंपल है. If you look at companies which have a very high debt on the balance sheet, they are going to face trouble, right? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो तो if your cost of इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया return on capital. Why is return on capital employed? If your cost of capital is high and if it's going to start detracting your return on capital, so then there's going to be less money left for you, for your shareholders or for your business. Yes. So, Bhaveshji, we have come to the end of the podcast. And once again, thank you so much for your time. And it's been a great, discussion. Sure. Thank you so much for having me, Bharat. Yeah, thank you.